Hello students, welcome to Luminary Academy, and today I am solving question number 3 of chapter number 8, exercise 8.1 of class 10 cbse. Okay, so in this the question says that sin a is 3 by 4, calculate cos a and tan a. Okay, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि sin a कितना होता है, sin a is equals to 3 by 4 and some people have perpendicular upon hypotenuse. आपको एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, अब आपको पता है कि साइन अगर आपको ए यहाँ लेना है, ए बी एंड सी, इफ़ यू आर टेकिंग ए एज हियर देन दिस विल बी योर थीटा. ओके, so some people, you will take opposite of the angle, so people will be this and this will be 4, hypotenuse will be, this will be 3, hypotenuse will be 4, and now you need to find the AB first. This length you need to find first. Okay, and this is only possible if you use PGT. Okay, so by PGT what you will do, AC square is equals to AB square plus BC square, right? So AC square is 4 square is equals to AB square. AB is not given to you, so I'll write AB as it is, and BC will be 3 square. So 4 square is 16 and 3 square is 9, and then AB square need to find, so we'll shift this to other side. So 16 minus 9 will be AB square, right? So if you do 16 minus 5, what you will get? You will get 7. Okay, under root 7 is your AB, right? So under root 7 is your AB, so AB is equals to root 7, right? So this is your answer. Now this is the answer of AB. Now you need to find, calculate cos A and tan A. So you know that cos A will be equals to, some people have curly black hair, so black is how much? Base. Cos A एंगल A ही है तो बेस यही रहेगा, तो रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 4, तो रूट 7 by 4 इज योर आंसर, राइट? नाउ tan A विल बी इक्वल टू, tan A कितना होगा? tan A विल बी इक्वल टू बेस अपॉन, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा. सो परपेंडिकुलर tan A, परपेंडिकुलर मतलब थीटा के सामने वाला, सो 3 एंड बेस कितना होगा? रूट 7, तो 3 अपॉन रूट 7. दिस इज योर आंसर. ओके, सो आई होप बच्चों समझ में आया होगा. प्लीज़ शेयर करें.